Hello students, good morning all of you and welcome back our online class Maths 8th standard. Students, today we are going to start a new chapter, that is ninth chapter, variation. Okay, what do you mean by variation? It is a new word for you. Yes, variation means changeable. Yes, and a variation means we have to comparison of the two quantities whenever one quantities are changing by the corresponding with others, that is called as a variation. So today we are going to discuss about that what is the variation. Okay friends, suppose we are taking that one quantity, okay, and automatically correspondingly if other quantities, if this first quantity will change its position and things measurements will change, then automatically if the second quantity is changing, then we have to say that is the one variation. Okay, either it is increasing that value or decreasing the value. Okay, did you understand students? For one example so I will tell, then after we will go to that chapter. Okay, so suppose one pen cost 5 rupees. Okay, so there are two quantities. क्या होता, दो क्वांटिटी क्या हुआ, एक पेन आया, पेन एक क्वांटिटी हुआ और उसका प्राइस जो है वो दूसरा क्वांटिटी हो गया. समझा, वो रिलेटेड है, एक पेन है और उसका प्राइस जो है सपोज 10 रुपीज, तो जो 10 रुपीज हुआ वो दूसरा क्वांटिटी हुआ. समझा, तो पेन नंबर ऑफ पेन्स, पेन से जो एक क्वांटिटी हो गया और उसका कॉस्ट जो है वो दूसरा क्वांटिटी हुआ. क्या मैं बोल रहा हूँ, वट एवर मे बी, इफ दिस नंबर ऑफ क्वांटिटीज विल इंक्रीज और द मेजर विल इंक्रीज. सपोज वन पेन कॉस्ट दिया था, 5 पेन पूछ रहे, तो 5 पेन तो नंबर ऑफ पेन से इंक्रीज हो गया, तो वही हिसाब से उसका कॉस्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा. ठीक है, तो जो इंक्रीज हो रहे वो दूसरा क्वांटिटी है, तो वो जो कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहे, नंबर ऑफ पेन इंक्रीज होगा तो पेन इसका कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहे, उसको रिलेटेड थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज कॉल्ड एज अ वेरिएशन. एंड वेरिएशन स्पेशली फॉर यू देयर आर टू टाइप्स, वन इज डायरेक्ट वेरिएशन एंड वन अदर वन इज इनवर्स वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन. ओके, डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता अभी आज ये वीडियो पे हमें पढ़ाएंगे. ठीक है, वी विल स्टडी इन दिस वीडियो व्हाट इज द डायरेक्ट वेरिएशन. ओके, एंड बिफोर दैट वी विल सी व्हाट इज दैट वेरिएशन. राइट डाउन फ्रेंड्स, वेरिएशन मींस two quantities are said to be in the variation if any increase or decrease in one quantities results in increase or decrease in other. एक क्वांटिटी का जब मेजरमेंट्स विल इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, ऑटोमेटिकली करस्पेंडिंगली इफ अदर क्वांटिटीज व्हिच वन इज रिलेटेड टू दैट फर्स्ट क्वांटिटीज, दैट ऑटोमेटिकली इट विल इंक्रीज और डिक्रीज, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएशन. ओके, एंड टाइप्स ऑफ वेरिएशन क्या होता है बच्चे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन, वन इज डायरेक्ट वेरिएशन, अनदर वन इनवर्स वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट फर्स्ट डायरेक्ट वेरिएशन. सो डायरेक्ट वेरिएशन क्या होगा ना, टू क्वांटिटीज are said to be direct variation if increase or decrease in the measure of one result in the correspondingly increase or decrease in the measure of other. ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन. मतलब मैं क्या जो एग्जांपल दिया वो डायरेक्ट वेरिएशन होता. ठीक है, मतलब एक क्वांटिटी जब इंक्रीज होता ऑटोमेटिकली अदर क्वांटिटी जो रिलेटेड है इसका साथ वो भी इंक्रीज होता. ये इसका क्वांटिटी मेजरमेंट कुछ डिक्रीज होगा तो उसका रिजल्ट डिक्रीज होगा, तो ऑटोमेटिकली इफ द अदर क्वांटिटी आल्सो विल डिक्रीज, एट दैट टाइम वी शुड से इट इज इन डायरेक्ट वेरिएशन. डिड यू अंडरस्टैंड, समझे क्या बच्चे? ओके, मतलब एक क्वांटिटी में एग्जांपल पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन फिर फर्स्ट डेफिनेशन का अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो क्वांटिटी दिया, whatever that quantity it has given, if that quantity is concerned now it is there, so that quantity will increase or decreasing. Suppose 1 pen cost or 5 pen cost it is given, if the number of pens will increase, okay, 10 it will be, what will happen, the cost of the pen it will be increase. So this relation is called as a direct variation. If the number of pen now cost given 10 pen cost 100 rupees, 3 pen cost how much, that means the number of pen डिक्रीज, द कॉस्ट ऑटोमेटिकली विल डिक्रीज. ज्यादा पेन है तो ज्यादा पैसा है,
कम पेन है तो कम पैसा है, तो इसलिए नंबर ऑफ पेज जब इंक्रीज होता और डिक्रीज होता ऑटोमेटिकली इसका कॉस्ट भी इंक्रीज होता और डिक्रीज होता करस्पॉन्डिंगली. सो दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट वेरिएशन. ओके, so let us take that one example formula that we should find out. That first suppose x and y are the two quantities, मतलब number of pens you will take that x, its cost price is y. okay, ऐसा दो क्वांटिटी, दो क्या होगा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल. इट इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनल सिंबल. प्रोपोर्शनल क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. और इनवर्सली दैट्स व्हेनेवर नाउ इन दिस केसेस वी हैव टू रीड दैट प्रोपोर्शनल सिंबल. और x is directly proportional to y. How will you read it? We can read it x is directly proportional to y. इसको ऐसे रीड कर सकते हैं. हम कैसे रीड कर सकते हैं, x is directly proportional to y and it is called as a proportional symbol. Did you understand? ऐसा it is called as a proportional symbol. And if this proportional symbol we have to take out, remove, then is equal to k. This proportional is equal to k. समझा? इसका प्लेस में हम लिख सकते क्या, is equal to k. ये जो प्लेस इसको रिमूव करें ना तो is equal to k हम दे सकते हैं. मतलब proportional if रिमूव करेंगे हम constant symbol दे सकते हैं. और x by y मतलब y if will come to this side, then x by y is equal to k. Or if more quantities if you take, what will happen, x1 by y1 is equal to x2 by y2 is equal to x3 by y3 is equal to dot 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 constant will come. हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे जितना क्वांटिटीज बढ़ाएंगे, ठीक है, उसका रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट. याद रखो बच्चे, ठीक है. इफ two quantities are x and y varies directly and x and y are their values. Suppose x का वैल्यू क्या होता है x1 and y का वैल्यू y1 होता, ठीक है. x and y are the directly proportional. इसका x का वैल्यू कितना होता है, x1 होता, x का y का y1 होता, वेरिएस होता. फिर इसका कांस्टेंट, उसका भी रेशियो भी क्या होता, कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि x by y is equal to constant. x1 y1 also is equal to constant होगा. ठीक है बच्चे, तो वो दिस इज द अबाउट दैट व्हाट इज द डायरेक्ट वेरिएशन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम एग्जांपल्स एंड विद एप्लीकेशंस. ओके, okay students, now I will explain about that for 1-2 examples and exercise 1 bits also I will explain to you. So let us see now. First example, fill in the missing entries. X and y are varies directly. Okay, x and y, what the relation between them, that is the direct variation. So what happens that students, here one thing, here 1 is there. Okay students, so 1 by 2.5. so first x by y, that means solution we can write to students. Here what is that given, x by y is equal to how much students given, now 1 by 2.5. okay, so what will get, observe here students, we can do this 1 by 25 by 10. If we make this 2.5, then fraction will get 25 by 10 or is equal to 10 by, it will change 25 or is equal to 5. If we cut, what will get, 5 2 ja 5 5 ja, that means 2 by 5. So it is our constant value we got. Okay, so now we have to compare this with this. Okay, now what is, you have to take this one x1, we can take also this is x2, this is y1, this is y2. okay, so now this with this relation we have to make. What is the value of this, because these all are the variation, direct variation. केयरफुली समझो बच्चे, ये जो दिया ये सब डायरेक्ट वेरिएशन है, मतलब ये दोनों का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज 2/5. ऑलरेडी वी गॉट वन वैल्यूज, जो 2/5 should come. So that means this ratio is equal to this ratio is equal to this ratio is equal to this, all ratios are equal. So already this ratio already we got 2/5. This ratio you have to find out. So what you have to do, now x1 by 7.5 is equal to, what is that, we can write 2/5 since it is a direct variation. Okay, now which implies you do that cross multiplication,
if you do that cross multiplication, what you get? 5x1 is equal to 2 into 7.5, or x1 is equal to, if you multiply this, how much you will get, friends? 15 by this 5 will come to this side, is equal to how much, friends? 3 will get. So hence we got x1 is equal to 3. Did you understand, friends? So we got now this x1 value is equal to 3. Next x2 will find out. Same like, friends, we can do second one. X2 by 10 is equal to how much? Same 2 by 5 we have tried because the constant term. Same cross multiplication to 5x2 is equal to 10 into 2 is equal to 20, or x2 is equal to 20 by 5 is equal to 4. So hence x2 is equal to 4. This is 4. Okay. Same as it, students, we can do this one, suppose. Okay. So what you do? Don't do y1 by 10. Same like 10 by y1 we have to do. So first of all, write down 10 by y1. Third one, 10 by y1 is equal to, because x by y will always the direct variation, what you have to take? x1 by y1 or x by y. So first given that what x by y, how much are 2 by 5. So we can write 2 by 5. Now you have to cross multiply. y1 into 2 is equal to 50. Okay. y1 is equal to 50 by 2 is equal to 25. So we got that this is 25. Okay. Same like, students, I will do this one also. This is fourth one. How much will get? Same like, write down 30 by y2 is equal to 2 by 5. Okay, which implies cross multiplication to y2 into 2 is equal to 30 into 5 means 150, and y2 is equal to 150 by 2 is equal to 75. Hence y2 is equal to 75. So this is y2 value we got. Did you understand, friends? क्या करना है हमको? जब डायरेक्ट वेरिएशन दिया, हमको उसका कांस्टेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, x y y. सो ऑलरेडी x by y ऑलरेडी दो वैल्यू दे दिया, उसका रेशियो फर्स्ट निकालो. वो कांस्टेंट वैल्यू, इसको रेशियो क्या आया? ये जो when the fraction number we have done, we simplified, we got this. This is our constant factor. Okay, so all factors are same, all ratios are same, all fractions are same values because it is a direct variation. So वो नहीं दिया तो this one ratio, this fraction is equal to this one. So 2 by 5 is equal to x1 by 7.5. Same like also 2 by 5 is equal to x2 by 10. So we can first I am writing x2 by, I written x2 by 10 is equal to 2 by 5. Next third one, 10 by y1 is equal to also 2 by 5 because the constant, all that fraction, all that ratio are constant. Okay, because it is a direct variation, it is given to you. Okay. Next means I will exercise, you should see 9.1, one question given. So what is the read first the question, friends? Vicky bought 50 notebooks for 240 rupees. कितना? 15 notebook, एक quantity है notebook, ठीक है? और ये rupees और दूसरा quantity है. How many notebooks? Notebook second, next. Okay, and what are the costs? So for that solution, students, first of all you make that box. Okay, you can make that one box. Like that, if you make the box, it is very easy for you. Here write first notes. Okay, number of notebooks. Number of notebooks. Okay, and a cost price. Cost in rupees. Okay. Number of notebook एक quantity है. This is you should take x and its cost price you should take that y. ठीक है. अभी क्या करना है? Number of notebooks x, that means x1. This is x1. First one is x1. This is x2. This is y1. This is y2. तो क्या होना है? हमको कितना नोट फर्स्ट है? 15 है. 15 का कितना कॉस्ट है? इसका कॉस्ट है 15 नोटबुक का कॉस्ट 240 रुपीस. समझे क्या? 15 नोटबुक का कॉस्ट 240 रुपीस आई बॉक्स में लिख दिया. ये नोटबुक है, ये रुपीस है. फिर और क्या दिया? सेकंड सेंटेंस में क्या दिया? नोटबुक नहीं दिया. कितना नोटबुक पूछ रहे हैं? मतलब ए पूछ रहे हैं.
ठीक है, और कॉस्ट दे दिया 160, ठीक है, मतलब x2 पूछ रहे, ठीक है। हमको क्या मालूम है, जो डायरेक्ट वेरिएशन है, वी नो दैट इफ डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता ना, x1 by y1 इज इक्वल टू x2 by y2, समझा, इट इज कांस्टेंट, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, इट इज डायरेक्ट वेरिएशन, सो हम क्या कर सकते हैं, जब क्यों ऐसा डायरेक्ट वेरिएशन हो रहे ना, नंबर ऑफ पेन्स, if this one, if that number of cost is increasing, then automatically this also will increase, yes, because the cost, sorry, it is decreasing, so cost also, a number of pens also will decrease. So since हम लिख सकते हैं, since it is a direct variation, हम लिख सकते हैं pens and its cost is in direct variation. Why you should write that it is in direct variation? Because the number of pens, if number of pens and its cost is there is number of that its cost price, if will decrease, automatically the number of pens will decrease. So hence it is a direct variation. Okay, so direct variation क्या होता, x1 by y1 is equal to x2 by y2. Put that values now. What you will get? Is equal to constant always. ठीक है. So put that value x1 means 15 by y1 मतलब 240 is equal to x2 हम नहीं दिया by y2 मतलब 160, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो x2 into 240 is equal to 15 into 160 और x2 is equal to 15 into 160 by 240, ठीक है। नाउ अभी क्या करना है, 0 को 0 कैंसिल करो, ठीक है, एंड 3 रिकॉर्ड करो, 3 5 जा 3 8 जा एंड 8 को कट कर दो, 2 जा कितना आया, तो 5 2 जा 10 नोटबुक्स, ओके। सो हेंस वी गॉट x2 is equal to 10, हमको x2 चाहिए था, तो अभी क्या लिख सकते हैं, हेंस there are 15 note, the cost of there are 10 notebooks, ठीक है। Did you understand students? No. Once again I will repeat it. Vicky bought 50 notebooks. First understand the quantities. Notebooks is one quantity and its cost price, first sentence, cost price second quantities, okay. Notebook and cost price I have written, then 15 the first quantity, second quantity this one. Next for that it varies that water x2, that means कितना notebook बोल कर नहीं बुझा तो कितना प्राइस 160, so बॉक्स में लिखेगा तो तुमको इजी होगा how to vary some, okay. So by the way we have to solve the all that your exercise. Thank you all of students.